which we are. Yes, very good afternoon, guys. Dosto, good afternoon. Right, come on. Can we proceed, my dear friends? Everybody, done. So, friends, we are done with the topic of which topic? Capital gains. So, friends, if you observe carefully, we are done with basics. We are done with residential status. We are done with agricultural income. We are done with clubbing and set off. We are also done with the concept of advance tax and levy of interest. Heads of income में क्या क्या हो गया बेटा? House property is done. Capital gains is done. IFOS is done. We just have only two more heads of income which are left. That is your salaries and what, my dear friends? PGBP. Are we clear with that, everybody? So today, my dear friends, without any delay, we are just left with three main topics. Other topics will not take much time. The three main topics what we are left is your salaries, PGBP, TDS. बस तीन ही मेजर टॉपिक बाकी है. ठीक है ना बेटा? Everybody? So first, let us start with income from salaries today. Are we ready, my dear friends? Everybody, sir? समाटली सर PGBP वो भी करेंगे ना? प्रॉब्लम क्या है? करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Sir, ready, my dear friends? Reply, come on. Come on, my dear friends. Tell me what is section 139(1). Correct only. Correct बोल के नहीं बोलते क्या यार? Due date to file return of income. What is the due date? 31st October in three cases. What are three cases? Companies other than companies subject to tax audit, partner of the firm if the firm is subject to tax audit. Any other case? 31st July. दोस्तों clear है ना बेटा? Everybody, sir? Good. Then what is section 5? Section 7. Section 9. 1017. Daily allowance, constituency allowance to MPs and MLAs. I have a question. Think properly and tell me. Is family pension taxable? You got my question? Is family pension taxable? किसकी फैमिली मतलब? पूरा बोल तू आंसर. Gallantry का वर्ड क्यों? If it's for armed forces, it is exempt. Other than armed force, what will happen? Taxable under income from other sources. What's the deduction we'll get? देखिए ऐसा रहता है 15,000 और 1/3, whichever is lower. अरे याद आ रहा नहीं आ रहा कुछ? बोलो ना मेरे भाई. Then speak out. 1026 AAA. What is section 64(1)(8)? Transfer of asset for the benefit of son's wife. Brilliant. 1032. Parent in whose hands income is clubbed will get exemption of 1,500 or amount clubbed, whichever is lower. दोस्तों, what is section 56(2)(7)(b)? Section applies only when issue price is more than face value. Taxability is on difference between issue price and fair market value, and that too is taxable only when issue price is more than fair market value. दोस्तों याद है ना बेटा? Everybody clear with this point, all of us? Good. 56(2)(8). Interest on compensation or interest on enhanced compensation is taxed in the year of receipt under income from other sources after reducing standard deduction at the rate of 50%. 56(2)(9). Advance money forfeited on or before नहीं हो, on or after 1/4/2014 will directly tax under income from other sources. It's not on or before, it is on or after. Please, getting clarity, everybody? What is section 56(2)(10)? Gift. How many categories are there in gift? 5. What are the 5 categories? Sum of money, movable property without consideration, movable property for inadequate consideration, immovable property without consideration, immovable property for inadequate consideration. याद है ना बेटा? Everybody, my dear friends, what are all covered in movable property? Shares and securities, jewelry, drawings, paintings, sculptures, archaeological collections, work of art, and bullion. दोस्तों, what is section 45(1)? 45(1)(a). Insurance compensation. It is taxable only when it is received on account of 4 cases. Damage or destruction. क्या है बोलो 4 cases? Don't open the book.
Flood, typhoon, hurricane, cyclone, earthquake, convulsion of nature. Number 2. Accidental fire or explosion. Accidental, not intentional. Third one. Riots or civil disturbance. Last one. Action taken by enemy or action taken in combating an enemy. 45-2. Conversion of capital asset into stock in trade. Both important, boss. 45-2A. Transfer of securities in demat form. Yaar. Follow what method? FIFO. 45-3. Partner to firm. 45-4. 45-5. Compulsory acquisition. 46. Distribution on account of liquidation. It's not taxable in the hands of company, but taxable in the hands of shareholders. 47. Transaction which are not regarded as transfer. 48. Computation mechanism. 49-1. Cost to previous owner. 50. Depreciable assets. 50A. Power sector units when they follow SLM. 50B. Next section, if you don't tell, go and jump outside. 50C. So, I have a question. If selling price is 200 lakh, stamp duty value 220 lakhs, कौन सा लेंगे? Obviously, because it should be more than what percent? More than 10%. याद है ना? Exactly नहीं, more. 50 CA. Unquoted shares. 50D. Whoa. If selling price is not ascertainable, fair market value is deemed to be selling price. Industrial वाला मेरे भाई 54D है वो. 54 क्या है? Sale of long-term residential investment is again made in residential. 54F. Any long-term other than long-term residential property. Investment is made in? Exactly. 54EC. Bonds. किसका? NHAI, RECL, PFCL, IRFCL. Time limit. Maximum exemption. Next. 54B. Agricultural land. Urban or rural? Common sense urban. If it's rural, why do you want exemption? कैसे भी taxable है ही नहीं ना यार, तो exemption क्यों चाहिए आपको फिर? दोस्तों clear है? Everybody getting clarity on this concept, all of us? Good, fair enough. Chalo guys, without any delay, today let's start discussion about one of the very beautiful head of income from salaries. And one point, let me tell you that this topic is very interesting, but the whole point to be noted is that some points we need to take effort in terms of remembering them. Allowances, perquisites and all, it takes some time to remember the points. That challenge is there. But all said and done, one point is there that this topic generally keeps coming in the exam for 4 marks, 6 marks, sometimes 8 marks. But generally it comes in exam for 4 to 6 marks. 8 मार्क तो बहुत रेयर देखे हम, 4 से 6 मार्क आता है. अगर जितना कैपिटल गेन का इंपॉर्टेंस है उतना इसका भी इंपॉर्टेंस है. और एक बार ऐसा भी हुआ था जिसमें सेट ऑफ केम इन एग्जाम फॉर 6 मार्क, क्लबिंग केम इन एग्जाम फॉर 4 मार्क, बताया था आपको मैंने, सैलरी केम इन एग्जाम फॉर 3 मार्क. Now will you tell that set of carry forward is more important than salaries? No. सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है बॉस. अगर कोई चैप्टर से 1 मार्क भी आ रहा है तो मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है बॉस. एवरी मार्क विल मेक अ डिफरेंस. 59 is different, 60 is different, 39 is different, 40 is different. It's not 1 mark, it is 6 months. 6 months of our life where juniors will become classmates. एक और 6 महीना निकल गया तो सीनियर्स बन जाते हैं. ठीक है ना बेटा? सो प्लीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू क्रैक एवरी पॉइंट परफेक्टली. चलो प्रोसीड करें सैलरीज में दोस्तों. ब्रिलियंट. लेट्स टॉक अबाउट इनकम फ्रॉम salaries. First of all, let's understand what is that we are going to understand in this. Correct? Only you heard what I told. First, let us understand what we are going to understand in this topic. Then we can proceed. Correct, my dear friends? I will divide this topic into 3 parts. Listen. Retirement benefits. What is that word, sir? Other word, allowances. Last word, perquisites.
If you understand these three taxability, our salary chapter is over. But it takes time to understand all these three taxability. That's a whole challenge. Correct? No, today I can't complete this chapter. Not possible. It takes some time. But today we'll talk lot of points. Taken a better. Now, retirement benefits. Here we are going to talk about the taxability of pension, gratuity, leave salary. These three are the major points which we are going to talk. And we are going to talk about one special concept called LTC, leave travel concession, for which there is a special exemption which is given under one section called 10(5). Gratuity is given by 10(10). Pension is given by 10(10)(a). Leave salary is given by 10(10)(AA). समझ में आ रहा है बेटा दोस्तों? What is section 10(5) exemption? Leave travel concession only for travel. We'll talk. आज ये पूरा पार्ट खत्म कर देते हैं हम. ये रिटायरमेंट वाला पार्ट पूरा क्लोज कर देते हैं. क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे हम. ठीक है ना बेटा? Apart from that, in allowances, we will talk all different types of allowances and their taxability and some exemptions which are given in the law. Can you name a few allowances which you know? Conveyance allowance, food allowance, transport allowance, food allowance, then अच्छा हो गया ना वो, and सबसे important भूल गए आप लोग, house rent allowance, HRA, अरे कितना की पॉइंट है यार वो, telephone allowance, what not, in everything there can be an allowance. Now my first question to you, what is the difference between allowance and perquisites? Excellent, that is the answer. Never ever tell the statement allowance is cash, perquisite is kind. That's one of the most dangerous statement what a student can give. Please always think in mind, my dear friends. Always keep this point in mind. Allowance is a fixed sum of money given by employer to the employee which is not concerned with the actual expenditure incurred. I repeat again, allowance is a fixed sum of money given by employer to the employee which is not concerned with the actual expenditure incurred. Whereas perquisite is a benefit given by the employer to the employee which is concerned with the actual expenditure incurred. Let's take a small situation which you can easily understand. If an employee is coming to me and telling, sir, I want some money for food. I told him, I will give you 100 rupees, do festival. He चले 100 रुपये में क्या होता सर? मैं बोला मेरे को सब लेना देना नहीं है, मैं 100 रुपये दूंगा, तेरे को जो खाना है खा ले. What do you call it? Allowance. Next situation. I told him, don't worry boss, तू रो क्यों रहा है? अपना ही होटल है, जा, तेरे को जो अच्छा लगता है वो खा ले. Perquisite. Next I told, you go wherever you want, eat whatever you want, I will pay the bill. Perquisite. Third case, you go wherever you want, eat whatever you want, you pay the bill, come to me, I will reimburse the bill. Perquisite. Correct, my dear friends? Simple terms we say that perquisite can be in three ways. Way number one, direct facility by employer. Number two, employee is taking from third party, but employer is paying to third party. Possibility number three, employee is taking from third party by paying to the third party, then employer has done reimbursement. समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ये पॉइंट क्लियर है? If this point is not clear, we cannot understand anything in salaries. The reason being, telephone allowance, fully taxable. Telephone perquisite, fully exempt. Tiffin allowance, fully taxable. Tiffin matlab lunch, breakfast, dinner, whatever you call it. But in act they use the word tiffin allowance. Food allowance is fully taxable. But food perquisite is taxable only if it is more than 50 rupees per meal. याद आ रहा है कुछ? तो अलावेंस का टैक्सेबिलिटी अलग है, परक्विजिट का टैक्सेबिलिटी अलग है. वो समझने के लिए बेटा सबसे पहले अपने को ये समझना है कि अलावेंस का परक्विजिट का फर्क क्या है. अगर एक क्वेश्चन में एक पॉइंट पढ़ रहे हम, अपन ये डिस्टिंग्विश कर नहीं पा रहे कि अलावेंस है परक्विजिट है, आगे क्या पढ़ेंगे बेटा? When we see the question, first we need to understand very clearly whether it is an allowance or perquisite. Then decide the taxability of allowance and perquisite. If you do interpretation only wrong and make allowance as perquisite or perquisite as allowance, then gone no. Your answer is completely gone.
So it is first very, very important that you classify correctly. Getting clarity, everybody? Speak out. Today the job is, this part we'll talk. Take it now? And we'll see what time permits. Clear no? Let's start. First of all, let me talk about one very, very important section called section 15. I will take 1 minute to tell this, which talks about the chargeability section of salaries, which says only one line answer. In order to tax under salaries, there must be an employer-employee relationship. When do you say that there is employer-employee relationship, beta? There is a contract of employment and there is a direction, supervision and control. Law never used these words, but meaning is that only. Law never told these words called direction, supervision, control. These words are not given by the law, but meaning is that. The reason being, for example, Shiva Teja is not an employee of expert, but I am definitely a professional who is working with expert. When expert is paying me, they will not do TDS under 192, but they'll do TDS under 194J, fees for professional services. 10% TDS they do and make payment to me every time. How about 10% काट के देते अब? Do you think I'll cry when 10% TDS is done? No, never. कैसे भी आगे जाके पे करना है? अभी कट के आ रहा तो ठीक है ना यार. It's as good as I paid advance tax. It's as good as I paid advance tax. Because advance tax what I have to pay is after reducing TDS only, no? जो TDS गया मतलब मेरा थोड़ा 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 जा रहा तो अच्छी बात है ना यार. मालूम नहीं पड़ता. Pain will not be there. Are you friends getting clarity or not? Speak out. Sir, I hope you are clear. 10% TDS का लॉजिक समझ गए ना बेटा? See, 2 days back, I was telling Sushil sir, सर आप एक काम करो सर, होटल स्टे whatever I'm doing in Pune, आप एक काम करो, आप एक्सपर्ट से पे कर दो. I've actually got it done. I told him, सर आप एक्सपर्ट से पे करो, मुझे जो पेमेंट देना है उसमें से माइनस करके मुझे पेमेंट दो. इससे मेरा फायदा क्या होगा? एक्सपर्ट पे कर रहा है, नहीं मेरे को जो देना है उसमें से पे कर रहा है ना यार. दैट इज माई कॉस्ट. हाँ, उनको क्रेडिट मिलेगा वो तो ठीक है, जीएसटी क्रेडिट, और मेरे को जो टीडीएस होना है वो कम होगा ना. अरे यार फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 लाख देना है, मुझे 1 लाख टीडीएस होता था, अभी 1 लाख एक्चुअली होटल का खर्चा चले गया तो मुझे 9 लाख से देंगे ना, तो टीडीएस तो 90,000 ही होगा ना. 10,000 मेरा पैसे जो स्टक हो जाएंगे, स्टक मतलब जो टीडीएस के पार्ट इट इज देयर दैट विल रिड्यूस. नो you getting my point? And expert is very much okay with that. Why? If expert is paying 10 lakh to Shiva Teja, they will show to faculty payment 10 lakhs. Now when they are paid like this, they will not show like this. They will show faculty payment 9 lakhs, hotel expense 1 lakh. उनको क्या फर्क पड़ेगा? अरे ऐसा भी करो वैसा भी करो, सेम ही होगा ना उनको तो. It's getting my point, no? Done. So in my case, is there employer-employee relationship? No. So is it taxed on salaries? So whatever income I get from expert, it's taxed where? PGBP. Get that point clearly. So what is the chargeability section, my dear friends? Section 15. 5 is scope of total income by. Section 15 is what? Chargeability section for salary. What is chargeability section saying? Come on. In order to tax under salary, there must be an employer-employee relationship. इधर तक सबको clear है? Everybody, my dear friends? Come on. Listen. Generally, what all kind of benefits employee get from employer? Listen, he will get something called basic salary. Yes or no, sir? ये तो fully taxable है. And there is something called DA. क्या मतलब इसका? Dearness allowance. And as per income tax law, that is also fully taxable. No doubt about it. Clear, no? Next. Come on, my dear friends. Children education allowance. बोलो क्या याद है आपको? सबसे कचरा एग्जामिशन ये 100 rupees per month per child, maximum 2 children. You have to understand that these all limits are fixed way back, which have not been altered. आज की डेट में 100 रुपए में कुछ नहीं मिलने वाला है. क्या मिलने वाला है 100 रुपए में? हाँ, कैडबरी आता है. एग्जैक्टली पानीपुरी खाने का तो 100 रुपए के ऊपर चले जाता है. क्या था? Is that clear with this point?
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जामेशन बेटा? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. हॉस्टल, ये तो और डेंजर. चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस कितना है बेटा? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम व्हाट बेटा? 2 चिल्ड्रन. स्टूडेंट इज आस्किंग, अगर 3 बच्चे तो क्या करना सर? एक को घर पे रखना क्या? नहीं, तीनों को पढ़ाओ, बट एग्जामेशन सिर्फ दोनों का मिलेगा. सर, लॉट ऑफ सेक्शंस दे हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ 2 चिल्ड्रन. हम 2, हमारे 2. हो गया. चलो बेटा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जामेशन? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. हॉस्टल 3 लाख. 300 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. दोस्तों यस और नो? नेक्स्ट, टिफिन अलाउंस 50 per meal. Wonderful. Nonsense answer. Fully taxable. 50 per meal is only for perquisite. अरे वही तो फर्क है ना मेरे भाई. नेक्स्ट, टेलीफोन अलाउंस फुली टैक्सेबल. एग्जाम में एक बार ऐसा आया था, जो नेक्स्ट पॉइंट बोलने वाला हूं मैं. एग्जाम में एक बार आया था ऐसा, स्पेशल अलाउंस. क्या होगा बेटा? ओवर एक्शन. जो एक्ट में एग्जामेशन है नहीं, वो पूरा फुली टैक्सेबल है. वन स्टूडेंट रोट, सिंस इट इज स्पेशल एग्जामेशन विल कम. कुछ भी. ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, एक बंदा ओवर टाइम काम कर रहा है, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिला है, फुली टैक्सेबल. क्यों देंगे मेरे भाई एग्जामेशन? चलिए सुनो माय डियर फ्रेंड्स, कम ऑन. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जामेशन है? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. हॉस्टल 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. चलो बेटा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आई वांट करेक्ट आंसर फ्रॉम यू, which is fully taxable, but there's an exemption of 3,200 per month for अरे ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, डेफ एंड डम. अभी कुछ याद आ रहा है? डेफ एंड डम. अरे यार यस और नो सर? नॉट जस्ट डेफ, इट शुड बी डेफ एंड डम. डेफ का मतलब पता है ना? डेफ का मतलब, हाँ, डम मतलब क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट लिसन हियर. ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो पढ़ लिया अपन. ये देखो बेटा, अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज, ये थोड़ा रीजनेबल एग्जामेशन है कंपैरेटिवली. उनसे कंपेयर करो तो थोड़ा सा बेटर है ये. इसका फर्क समझ में आना बेटा? सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसके लिए देते जनरली? होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम. ना एक पॉइंट लिखूंगा इधर, देख लो भाई. Office to client place, it is called conveyance allowance, which is fully not taxable. Obviously ना यार, it's used for what purpose? Official purpose. तो टैक्स क्यों करेंगे यार? Transport allowance is different, conveyance allowance is different. When you get into articleship, when you go to client place, they'll give you conveyance allowance. पर एक पॉइंट है, 1000 रुपये मिला आपको conveyance allowance, आपने 800 रुपये खर्च किए तो 200 टैक्सेबल हो जाएगा. अरे ये सर नो सर? सर टेलिंग 1000 दिए तो 800 थोड़ी खर्च करेंगे हम, बीच में रास्ते में खा के आ जाएंगे. अच्छा, ₹1000 से 1200 खर्च करके आते हैं अपन. एग्जैक्टली. सर क्लियर. नेक्स्ट, ऑनलाइन में स्टूडेंट बोल रहा है उमेश, सर कैश में मिले तो किसको मालूम पड़ता? अरे ऑब्वियसली कैश में मिले तो कुछ मालूम नहीं पड़ता भाई. हाँ मिलता है ना? यस. नेक्स्ट, अलाउंस टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉयज. एग्जांपल,
somebody is working in the bus, working in transport department, correct? No, exemption is 70% of allowance or 10,000 per month. ये थोड़ा reasonable है, whichever is lower. Sorry, allowance for transport employees 70% of allowance or 10,000, whichever is lower, that is the exemption. समझ में आ रहा ना बेटा? चलो my dear friends, come on, reply. What is the exemption for children education allowance? 100 per month per child, maximum 2 children. Hostel education allowance, I mean hostel children hostel allowance, 300 per month per child, maximum 2 children. Overtime allowance, fully taxable. Now I have a question. Shiva Teja is doing job, let us say in one medical pharma manufacturing company. They gave me 10 lakh rupees to do some research and development for the pharma company. In exam question has come, research allowance. What allowance? What they gave in the question is, research allowance 1 lakh is received, 90,000 is spent. क्या करेंगे? 10,000 is taxable. Indirectly what I am trying to tell you is that, listen here, very clearly listen to the language what I'll write now. In case of allowance given for official purpose, whatever amount is spent is what better? Not taxable. If you have got 1 lakh, you spent 1 lakh, nothing is taxable. You got 1 lakh, but you spent 90,000. एक और क्लास का एग्जांपल दूं क्या? In lot of companies they give money for uniform allowance. What will happen? जितना स्पेंड करे उतना टैक्सेबल नहीं है, बाकी पूरा टैक्सेबल. वो क्वेश्चन खुद बताएगा कितना स्पेंड करे. समझ में आ रहा क्या बेटा? Everybody, my dear friends, imagine expert has given 500 rupees telling you buy expert t-shirt to Shiva Teja. Assume employee, मैं 500 रुपए का जाकर शर्ट परचेस करके आया, कुछ टैक्सेबल होगा क्या? नहीं. You're getting what I'm saying, everybody? Sir, that's an official t-shirt only, not personal. Are we getting clarity, everybody? Next point to listen here. Medical allowance. Medical allowance, क्या लगता है आपको? Fully taxable. Medical allowance, fully taxable. Next, tribal area allowance. What is tribal area? Yeah, you're working in some forest area. Law is telling, enjoy. Jing 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 la la. 200 per month is exempt. बहुत ही कम एग्जाम्पशन है, पर क्या कर सकते हैं, जितना मिल रहा है उतना. Can I proceed to the most crazy important point which comes in exam almost every time? What is that? Exactly. हाँ? कौन सा? अरे वो देखेंगे ना बाद में, लिस्ट में देख लेंगे, वो बहुत रेयर आता है. रिटर्नड भी है, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस भी है, काउंटर इंसर्जेंसी 3900, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया 4200, वो भी है, देखेंगे. But let's move to something very, very important. HRA. What is HRA? House rent allowance. इसका कुछ exemption है क्या? बहुत है. अरे कितना बहुत है भाई. Exempt under section 1013A. क्या बोला वो? आर्यन कुछ तो बोला है. Exempt under section, which section sir? 1013A. And least of the following is exempt. I repeat again, exempt under section 1013A, and what is exempt is least of the following. Number 1, actual HRA received, मतलब जितना मिला उतना. Number 2, rent paid minus 10% of salary. Student is asking, sir rent कुछ पे नहीं किया, वो खुद की घर पे है, तो जितना एचआरए मिला उतना टैक्सेबल है. किराए की घर पे है सर, पर रेंट पे नहीं कर रहा है, जितना मिला उतना टैक्सेबल है. सो exemption will come only when you stay in a
rented house and you paid rent. Are we getting clarity, everybody? बोलो बेटा exemption कब आएगा? Exemption will come only when you stay in a rented house and rent is paid. I repeat again, exemption will come only when you stay in rented house and the rent is paid. चलो बेटा कितना exemption है? Least of the following is exempt. What is the first one? Actual salary received. Then rent paid minus 10% of salary. Third one, 50% of salary. If house is in DMCK, Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. That's it. Other places, 40% of salary. Chalo beta. 50% of salary कब है बेटा? Houses in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. I repeat again, 50% of salary if houses in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Any other place, 40% of salary. Now, big question mark here is, what is the meaning of salary? Where they told salary means basic plus DA if part of salary for all retirement benefits. If part of salary for all retirement benefits. That who will decide practically? Employer will decide. In exam, who will decide? Question will tell whether it is part of salary or not. Plus commission. Understand this language very clearly. Commission, if given as a fixed percentage of turnover. चलो बेटा क्या लिखा मैंने? Basic plus DA if part of salary for all retirement benefits plus commission if given as a fixed percentage of turnover. Sir, last what I wrote, commission if given as fixed percentage of turnover, instead of writing all that, can I simply write the word fixed commission? Absolutely, answer is no. Fixed commission is different. Commission given as fixed percentage of turnover is different. In exam, so many times this point is coming where they are giving as fixed commission. समझ में आ रहा है ना बेटा? Fixed commission अलग है. Commission given as fixed percentage of turnover is different. Both are different. So getting clarity? Everybody, my dear friends. So whatever are all the components of salary, all the components of salary we will consider. Then what we get is called gross salary. From the gross salary, we reduce deductions under section 16. First one, 16(1)(a). क्या हो बेटा? अरे हाँ, components of salary में क्या क्या आएगा? Basic, DA, HRA, bonus, commission, allowances, per credit, सब कुछ आएगा ना? पूरा मिलने के बाद ग्रॉस सैलरी. अरे यार अभी मैं सिर्फ बेसिक DA HRA लिखूंगा तो बाकी तो क्या करेंगे बोल के आप पूछेंगे. सो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, मतलब जितना भी सैलरी का कंपोनेंट है वो पूरा आ जाएगा. देन यू गेट योर ग्रॉस सैलरी. फ्रॉम दैट रिड्यूस व्हाट? स्टैंडर्ड डिडक्शन. कितना है बेटा ये? याद है ना? व्हाट इफ ग्रॉस सैलरी इज 40,000? स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 40,000. दैट्स इट. नेक्स्ट 16(2). एंटरटेनमेंट अलाउंस. चलो बेटा क्या लिखा मैंने? एंटरटेनमेंट अलाउंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटरटेनमेंट अलाउंस deduction is only for government employees. चलो बेटा क्या लिखा मैंने? Entertainment allowance deduction is only for what employees, sir? And deduction is list of the following. चलो बेटा come on, please concentrate. Deduction is what बेटा? List of the following. Number 1, actual. Actual मतलब actual what we received. Second, 20% of basic salary. Third one, बोलो कुछ आइडिया? याद नहीं आ रहा कुछ? Third one, 5,000.
ठीक है, याद नहीं आ रहा मतलब आई एम हैप्पी वन वे दैट यू आर ऑल सिटिंग हियर. आप समझे क्या मेरे पॉइंट? याद नहीं आ रहा मतलब हैप्पी वन वे दैट यू आर सिटिंग हियर एटलीस्ट. याद नहीं आ रहा बाहर बैठे तो क्या यूज है फिर? क्या बेटा, क्या 2 केस वाला बोल रहे? अरे 1/3 हो सब पेंशन वाला है. ग्रेचुइटी रिसीव, ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड, 2 केसेस, 1/3, हाफ. बात करेंगे आज ही, बात करेंगे थोड़ी देर बाद. फर्स्ट ये स्मॉल स्मॉल चीजें खत्म करेंगे, फिर अपन उसमें जाएंगे. कंट्रोल, वेट, अपना टाइम आएगा. चलो बेटा, व्हाट इज द एग्जाम्पशन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस? फुल. फुल क्या है? फुल एक्चुअल्स. नेक्स्ट 20% ऑफ बेसिक सैलरी. थर्ड वन 5,000. चलो बेटा, लास्ट वन 16(3) professional tax. This professional tax is actually paid to the state government. I repeat again, professional tax is actually paid to which government, my dear friends? State government. Is that correct? No? And let me tell you one point, which I'm sure you all know that point. आपको मैं याद दिलाना बस. Listen carefully. This professional tax, my dear friends, this professional tax, if it is paid by employee, reduce it. Paid by employer, add and then reduce. Add मतलब क्या? पहले add करो. अरे add मतलब पहले it will form part of your gross salary, then reduce it. समझ में आ रहा है बेटा? कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी. We will take all the components of salary, then what we get is your gross salary. From that we take deduction in section 16. 16 में कितना डिडक्शन है? 3. पहले वाला क्या बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन. हाउ मच? 50,000. 16(2). Entertainment allowance 16(3). Professional tax. Balance what we get is called taxable salary. Friends, everybody getting clarity on this point? All of us please reply. Done. Let's proceed. Now listen. Sir, imagine there is one person, Mr. A, who is an employee, who is in the pay scale of 20,000 -1,000 -30,000. क्या मतलब है इसका? Every month नहीं बेटा, every year 1,000 will increase, but it will not go beyond 30,000. This is called pay scale, and we will also call it as pay band. समझे क्या बेटा? या राइट वन क्वेश्चन. समझ टली क्वेश्चन इतना जल्दी? हाँ. रेडी? मिस्टर एक्स is a finance manager of ABC Limited. He is in pay scale of 40,000 -1,000 -50,000 with effect from 1st Jan 22. With effect from which date beta? 1st Jan 22. He also received following. सर क्वेश्चन समझ रहे क्या? हाँ. DA 10,000 per month. 60% is part of salary. Transport allowance 3,000 per month. Overtime allowance
5,000 per month. Fixed commission 8,000 per month. Children education allowance 1,000 per month for 3 children. 1,000 per month for how many children beta? 3 children. HRA 15,000 per month. Rent paid 12,000 per month. Clarity आना चाहिए ना दोस्त. Entertainment allowance 4,000 per month. क्या बेटा? Professional tax 2,000. 1,000 paid by employer. Compute taxable salary for assessment year 23-24. Two minutes. आइजा क्या आंसर बोलना तो करना पहले.
Last 2 minutes. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या है आंसर तुम्हारा? बोलो यार. ऑफलाइन वाले तो बोल रहे नहीं, आप तो बोलो कम से कम. दोस्त शाहजी, केम छो? यस आदित्य, संपली. समझ गया ना? ऐसे बोलते ना. मैं जो बोला तो समझ गया ना, तो बस खत्म. हाँ, ऑनलाइन में कुछ आंसर आए भाई. अंजलि, व्हाट इज द आंसर?
कैन वी डिस्कस? चिराग, गुड. Yes, guys. बोलो. What is the basic salary? बेसिक सैलरी कौन सी, मतलब बेसिक सैलरी कौन सी, क्या होता है नॉनसेंस? 40,000 इंटू क्या नहीं आएगा? 40,000 इंटू 9 months. अरे क्या हो गया यार तुम लोगों को? 40,000 डैश 1,000 डैश 50,000 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st Jan 22. अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 22 23 ना, सॉरी. अच्छा, सिर्फ 3 महीने का है क्या? अरे बाप रे, तो पहले 9 months का क्या है फिर? अरे प्रीवियस ईयर की बात करो यार. अरे एक्चुअली क्वेश्चन करेक्ट ही चाहिए, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को, मेरे समझ में नहीं आ रहा. सर लिसन, 1st Jan 22 करेक्ट. इसका मतलब क्या है? 1/1/22 से लेके 31st December 22 तक कितना है सैलरी? 40,000. अरे ऐसे कैसे क्या? अरे इसका मीनिंग समझा ना तुम लोगों को ऑलरेडी. अरे फाइनेंशियल का करेंगे ना यार. उधर का फाइनेंशियल क्या देखता है यार, हर साल एक बार 1,000 रुपये बढ़ेगा. अरे इसके लिए तो पे स्केल पे बैंड बढ़ा है ना आपको यार. नहीं यार. हाँ, 9 महीने कैसा आया? अरे यार अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23. मतलब अप्रैल से लेके दिसंबर तक कितना है? 40,000. जैन से लेके, प्लीज डोंट टॉक, अप्रैल से दिसंबर 40,000, जैन टू मार्च 41,000. यार क्या बोल रहे यार, समझ में आया नहीं आया? अरे 1st Jan 23 से 41 हो जाएगा ना यार. अरे उधर कैलेंडर फाइनेंशियल दिमाग मत चलाओ. ये डेट से इसमें आया मतलब इधर से एक साल तक 40, उसके बाद 41, फिर 42. हाँ, अरे वही तो लिख रहा था मैं इधर. 40,000 इंटू 9 प्लस 41,000 इंटू 3 कितना है? 4,83,000. यार समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? आप इसमें रुक गए क्या? करें आप लोग सही? पूरा गड़बड़ कर दिए. 3 कैसा लेते यार? अरे कैसे कैसे फाइनेंशियल लेता हूँ, क्लियर समझाना मैं, हर साल चेंज होगा करके. नेक्स्ट डी ए कितना है? 72,000. क्या बोल रहा है दोस्त? 6,000 इंटू 12 ना. अरे यार 10,000 पर मंथ है ना. अरे क्या पागल हो गए क्या? 1 लाख
20,000 fully taxable no 60% of part of salary का मतलब क्या है that will use it for HRA calculation taxable तो पूरा है ना ओके शिवा कंट्रोल इनका सिचुएशन तेरे को समझ में आ गया ना तो चिल कर ठीक है सर डियरनेस अलावेंस is fully taxable and what they gave in the question 60% is a part of salary that is only relevant for HRA calculation but जो taxable है वो तो पूरा ही है ना बेटा next point अरे पार्ट ऑफ सैलरी मतलब मीनिंग वही है यार सर क्लियर है क्या अरे यार आप चुप करो यार बोलो आंसर बोलो नेक्स्ट क्या है ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है कुछ एग्जाम्पशन है क्या नेक्स्ट ओवर टाइम अलाउंस कितना है नेक्स्ट ये बराबर किए ये सब तो मस्त बोल रहे हाँ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है कितना दिया उसको हाँ 9,000 अरे उसको दिए कितना 3,000 that means 1,000 into 3 into 12 minus 100 into 2 into 12 अरे यार करेक्ट ओ थैंक यू सर कितना है ये बराबर किए या ये भी कर दिए गड़बड़ ये बराबर किए नेक्स्ट अरे क्या उमेश तू आंसर चेंज करते जा रहा कि एक एक बार कुछ आंसर टाइप कर रहा है डिलीट कर रहा है टाइप कर रहा है डिलीट कर रहा है क्या गेम खेल रहा है क्या यार हाँ कितना नेक्स्ट उसके अलावा कुछ है HRA प्रोफेशनल टैक्स 1,000 रुपए वो भी तो लेना है ना यार पेड बाय होम एम्प्लॉयर देन एंटरटेनमेंट अलाउंस वो भी लेना है ना अरे यार क्या हो गया यार जवाब दो यार कितना है नेक्स्ट और कुछ बस ये टोटल क्या होगा ग्रॉस सैलरी कंट्रोल पहले एग्जाम्शन लेना है ना उसके बाद टोटल निकालेंगे ठीक है ना आदित्य जी समझ में आ रहा है कि आपको स्टूडेंट टेलिंग सर थोड़ा टाइम लग रहा है सर ट्रैक पे आने रुको आप इतना इमोशनल मत हो जाओ होता है सर कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन नेक्स्ट 16 क्या है बेटा कितना मिलेगा क्यों ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 16(3) प्रोफेशनल टैक्स कितना है 2,000 बराबर है ना बेटा एंड डोंट आस्क मी दैट नॉनसेंस क्वेश्चन कॉल्ड सर 1,000 ऐड करके 2,000 माइनस क्यों करे अरे मेरे भाई प्लीज डोंट आस्क दैट काइंड ऑफ क्रेजी नॉनसेंस रेडिकुलस बुलशिट क्वेश्चन गुड डायलॉग तो मस्त बोलते HRA working I hope you would have done correctly HRA चिराग बराबर किए क्या बेटा सैलरी रॉन्ग हो गया तो बराबर किया यस बोल रहा है क्या रॉन्ग हो गया अच्छा अलाउंस वगैरह ठीक हो गया ठीक है व्हाट इज एक्चुअल सैलरी रिसीव्ड सॉरी एक्चुअल HRA रिसीव्ड $15,000 into 12 को भी कैलकुलेटर यूज कर रहे कितना पैथेटिक सिचुएशन में हम लोग तुमको कोई बोल रहा है तुम्हारा दोस्त चिराग क्लास में ध्यान दे जरा उमेश बोल रहा है ऐसा वो तेरे को बोल रहा है सेम टू यू लेस exempt under which section बेटा 1030 नहीं फर्स्ट वन क्या है बेटा एक्चुअल्स 1 लाख
80,000. Second, rent paid minus 10% of salary. यार बोलना यार, 12,000 into 12 minus 10% of 4,83,000 plus 72,000. समझे क्या ये? Some are telling, sir commission भूल गए आप. You Mr. Cute boy, cute girl, commission will not take. Why? Commission is considered only if it is a fixed percentage of turnover. सर मजा आ रहा क्या? ऐसे ही परफेक्ट होंगे सैलरी में, और कोई ऑप्शन नहीं है. रिवाइज प्रैक्टिस ओनली मेक्स मैन परफेक्ट, वुमन ऑल्सो. कितना ये? 88 फाइनल फिगर क्या? हाँ, थर्ड वन किधर है? कुछ दिए क्या? कुछ भी नहीं दिया तो 40% लेते हम. कितना है 40% ऑफ सैलरी? 483 प्लस 72 का 40%. जी 2 लाख. हाँ, लीस्ट कौन सा है? व्हाट इज टैक्सेबल? 88,500. 91,500. Take that figure of 91,500, get the gross salary, then find out taxable salary. वापस ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी सर आंसर ये है सर, फाइनल आंसर. एक बार एक आंसर क्यों आ रहा है सर? इसे कैसे हो सकता है? महाराष्ट्र में तो यही आंसर आता है, आपको एमपी में अलग आंसर आ रहा है क्या बेटा? एमपी में महाराष्ट्र में सब जगह एक ही आंसर आना चाहिए. You are writing exam of Institute of Chartered Accountants of India, not of Madhya Pradesh. ठीक है ना बेटा? उमेश करेक्ट आंसर, गुड. नित्या जी समझ में आया क्या? क्या ऐसा बार बार आंसर चेंज करते जा रहे हैं आप? गुड. मिस साक्षी अजय पवस्कर जी, क्या कर रहे हैं आप ऑनलाइन में? ना कोई जवाब दे रहे, ना कुछ बोल रहे, कुछ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन चालू करके छोड़ दिए क्या? प्रवीण मोटेगांवकर क्या कर रहा है भाई? कोई आंसर नहीं, कुछ नहीं. अरे आंसर बोलो यार, कितना है ग्रॉस सैलरी? चिराग बोलना. लिख रहा है. कितना है दोस्तों ग्रॉस सैलरी? हाँ, 9 लाख. Do you think it's right? Balance 9 lakhs. What is that quality? Wonderful. बस एक और क्वेश्चन दूं क्या? करते क्या? प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट होना है. एक और क्वेश्चन. रेडी? स्टूडेंट सेलिंग हो गया क्या सर सैलरी? नहीं रे भाई, अभी रिटर्न बेनिफिट्स पढ़ना है, परक्विट्स करना है, बहुत काम बाकी है भाई. फिर चालू किया क्या? मंदिर है तो कितना ठंड लग रहा है, शिवरिंग आ रहा है. चलो, कैन आई प्रोसीड? हेलो, राइट डाउन.
From the following details, from the following details given by Mr. X, from the following details given by Mr. X, from the following details given by Mr. X, determine, from the following details given by Mr. X, determine taxable salary. From the following details given by Mr. X, determine taxable salary. Right below. Basic 40,000 per month. DA 8,000 per month. Bracket 50% forms part of salary. Forms part of salary का मतलब क्या है? For all retirement benefits. Correct? No? Sir. Next. Tribal area allowance. Tribal area allowance 1,000 per month. Children hostel allowance 3,000 per month for 2 children. समझ में आ रहा है ना बेटा दोस्तों? Next, research allowance 10,000 per month, bracket 9,000 per month is spent. Conveyance allowance 2,000 per month, bracket fully spent. So clear, no? Next, tiffin allowance 1,500 per month, fully spent. Telephone allowance 1,200 per month. Overtime allowance 500 per month, bracket discontinued from 15th December 22. अरे यार ऐसे खतरनाक क्वेश्चन करना चाहिए. चुन्नू मुन्नू करके कुछ हुआ तो क्या फायदा? इतना इमोशनल क्यों है यार? If you want me to make you happy just by giving small questions, I'll give. But उसका कोई फायदा नहीं है. इधर कुछ नहीं आएंगे, एग्जाम में जाकर कुछ नहीं आएगा. फिर नाराज, मैं क्यों नाराज होता है यार आपसे यार? हाँ जी. मेडिकल अलाउंस 3,000 पर मंथ. क्या हुआ तुमसे? हाँ हाँ जी, उसके लिए आप लोग. व्हाट इज इट? किसका ये? कौन करता है ऐसा? अच्छा, मेडिकल अलाउंस 3,000 per month. Next, professional tax 2,500, 1,500 paid by employer. ठीक है ना? एक छोटा सा ट्विस्ट ऐड करो क्या? मैं आपको आंसर बोल दूंगा उसका लास्ट ये पॉइंट का, बड़ा करते वक्त तो आप करो. Employer contribution to RPF 14% of basic salary. Employer contribute कितना किया बेटा? 14% of basic salary. How much is not taxable? 12% of basic plus DA plus commission if part of salary. तो आप जब वर्किंग करोगे ना, आपको क्या कंपेयर करना है बेटा? सुनो, 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए एक फिगर आएगा, 14% ऑफ बेसिक एक फिगर आएगा. वो डिफरेंस को आप टैक्स करो. इधर बेसिक बोला बोल के आप उधर भी बेसिक मत लो. अरे समझ में आ रहा है क्या? स्पीक आउट बेटा. नेक्स्ट, फिक्स कमीशन. क्या करेंगे इसको? फुली टैक्सेबल.
सर ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आरपीएफ का समझ गए ना, क्या करना है आपको? नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। अरे यार थोड़ा सा, मैं नो थोड़ा क्रेजी कर रहा हूँ मैं, बट परफेक्ट हो जाएंगे यार, बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ 11,000 एट 11%, दैट्स इट। 9.5 के ऊपर टैक्सेबल। 11% को 11,000 मिला, मतलब क्या है? 1,500 रुपए टैक्सेबल। वही 1 लाख का 1.5 1,500। यार समझ में आ रहा है ना बेटा, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ। अरे बाप रे, इतना दे दिया मैंने। ठीक है, लास्ट पॉइंट, HRA 20,000 पर मंथ। अरे ऐसा क्वेश्चन एक सॉल्व करे तो 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करे, ऐसा बराबर है यार। HRA 20,000 per month, 15,000 per month rent. House is in Hyderabad. ए, क्या हुआ? मेरा रिएक्शन के लिए असर आ गया वो, ऑब्वियसली। अरे एम्प्लॉय कर रहा तो एम्प्लॉय का भी करेंगे ना। दोस्तों आप मुझे बताओ, टेल मी नाउ, लिसन 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 लिसन, 1 मिनट, डोंट राइट। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ क्या करेंगे बेटा? मोर देन 12% इज टैक्सेबल। 12% ऑफ व्हाट? बेसिक प्लस डीए पार्ट ऑफ सैलरी प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ये क्वेश्चन में तो फिक्स कमीशन है, कमीशन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर तो है नहीं। तो आप क्या करो, बेसिक ले लो, डीए विच इज पार्ट ऑफ सैलरी फिगर ले लो, उसका 12% निकालो, एक फिगर आएगा। 14% ऑफ बेसिक सैलरी निकालो, एक फिगर आएगा। दोनों कंपेयर करो, अगर 14% वाला ज्यादा है तो डिफरेंस को टैक्स करो। दैट इज एम्प्लॉयर का ट्रीटमेंट। जो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट किया आरपीएफ को, वो सीधा 80C का डिडक्शन आएगा। उधर कोई लिमिट अप्लाई मत करो, उधर 12% 10% मत बोलो भाई, जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना डिडक्शन आएगा, बट मैक्सिमम 1,50,000, दैट्स इट, याद रख लो। समझ में आ रहा ना बेटा? दोस्तों, कंप्यूट टोटल इनकम। टोटल इनकम पूछा मैंने, स्मॉल क्वेश्चन, इतना छोटू क्वेश्चन है। इतना ही क्वेश्चन है यार, कितना छोटा है। एग्जैक्टली। क्या जनवरी टू दिसंबर लेना है? कुछ भी क्वेश्चन बोल पूछ रहे हैं आप।
अरे यार असेसमेंट 23-24 मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 ना यार. ये क्या क्वेश्चन है आपका? क्या क्वेश्चन है यार आपका? कौन सा? अरे अप्रैल से आएगा ना यार. अरे यार पूछने का क्या है उसमें? पूछने का क्या पॉइंट है उसमें? प्रीवियस ईयर 22-23 है ना यार. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया तो बोलो आंसर. Should I wait or should we discuss? Wait. Okay. Online some answer has come.
मेहनत कर रहे ना, सैलरी से ब्रेन बहुत हीट हो रहा है सबका। नहीं नहीं कुछ नहीं, इनसे बात कर रहा। आंसर गलत दो, देखता फिर। ये डोर बंद कर देना शिवा, डोर बंद कर देना। इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम इज टैक्सेबल नो, इधर 11% मिला है तो 1.5% टैक्सेबल हो जाएगा। सी व्हाट हैपेंस इज आई गेव सो मेनी पॉइंट्स नो, इसमें थोड़े पॉइंट्स एग्जाम में आके 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। कैन वी डिस्कस बेटा? अरे यार ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स नॉट मोर देन दिस। उमेश क्या बोला आंसर तेरा? 7,19,000। देखते बेटा सही है नहीं है, चेक कर लेते हैं, रुक जा 2 मिनट। चलो बेटा, फ्रेंड्स व्हाट इज बेसिक सैलरी? 4 lakhs। फिर उसके बाद क्या दिया बेटा मैंने? कितना बेटा डीए? ठीक है नेक्स्ट। ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना एग्जाम्शन है? 200 पर मंथ, तो कितना टैक्सेबल है सिर्फ? दैट्स इट, वेरी गुड। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस क्या करेंगे इसका? 300 इंटू 2 इंटू 12, 300 एग्जाम है, मिला कितना? एग्जैक्टली कितना है फिर? 32,400। चेक कर ले दोस्त, बराबर है क्या? नेक्स्ट और क्या है? रिसर्च अलाउंस क्या करेंगे? जितना अनयूटिलाइज्ड है वो टैक्सेबल हो जाएगा ना? एग्जैक्टली नेक्स्ट। टिफिन अलाउंस, क्यों? ये तो पूरा स्पेंड करे ना। टिफिन अलाउंस व्हाट डिड आई गिव? फुल्ली स्पेंट आई गिव नो, पूरा खर्चा किया तो क्या होगा? सो व्हाट, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। वो ऑफिशियल अलाउंस थोड़ी है, ऑफिशियल में आप बोलो जितना स्पेंड करे उतना एग्जाम डे करके। नेक्स्ट, ओवर टाइम अलाउंस कितना है? कितना है वर्किंग बोलो इसका? 500 इंटू 8.5। कौन सा हॉस्टल का क्या? $3,000 per month for 2 children।
तो लास्ट मंथ में अपन 3000 इंटू 2 इंटू करें ना, इस बार भी ऐसे एज्यूम करेंगे। लास्ट टाइम 1000 इंटू 2 करें ना अपन, तो 64,800 है क्या? ठीक है, नेक्स्ट। ये कितना ही है? नेक्स्ट। मेडिकल कितना है बेटा? नेक्स्ट। टेलीफोन कितना है बेटा? टेलीफोन 64 नहीं है क्या? तो 64 क्या बोल रहे थे बेटा आप? टेलीफोन कितना है? 16। $14,400। नेक्स्ट। और क्या है? पीटी पेड बाय एम्प्लॉयर 1,500, बराबर है बेटा? और कुछ? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इसका नोट करें, बनाएंगे अपन। नेक्स्ट। अच्छा, ऑलरेडी बना दिया नोट आप? ठीक है, चेक कर लेते फिर नोट। हाँ, लेंगे ना वो भी। व्हाट इज द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बेटा? 14% ऑफ 4,80,000। कितना ये? 67,200, बराबर है ना? स्पीक आउट। अलाउड इज इक्वल टू 12% of basic plus DA, which is a part of salary for retirement benefits. So 12% of 4.8 lakhs plus 96,000, बराबर है ना बेटा? यार दोस्तों बोलो, 96 नहीं है वो, 48 है वो, क्योंकि व्हाट इज पार्ट ऑफ सैलरी इज ओनली 50%, नो? 48,000, बराबर। सर मजा आ रहा ना क्वेश्चन? कितना है? 63,360 फाइनल फिगर, नो? हाँ ठीक है। देयरफॉर टैक्सेबल कितना है बेटा? 38। एक्सीलेंट, क्या मजेदार क्वेश्चन है ये। अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट ध्यान में जा रहे हैं दिमाग में? सर रिविजन बैच, वी नीड टू बिकम परफेक्ट by revising and becoming perfect. The objective is that only. 3840. Next. क्यों? एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना है? 24,000। नेक्स्ट। HRS का वर्किंग कर दिए क्या आप लोग? कर दिए क्या? बोलो, HRA कितना मिला? लेस एग्जाम कितना है? फर्स्ट वन एक्चुअल्स 2,40,000। दोस्तों बोल रहे, सुन रहे क्या आप लोग? हाँ। सेकंड, रेंट पेड कितना है? 1,80,000 माइनस 10% ऑफ 10% of 5,28,000. 127,200. Third one, 40% of 5,28,000. 2,11,000. लिस्ट का एग्जामेशन क्या है? 127,200। समझ में आ रहा ना बेटा? दोस्तों कितना है? 1,12,000. दैट इज माई टैक्सेबल HRA। समझ में आ रहा है क्या बेटा? So my taxable HRA is 1,12,800. I'm sure we are getting a clarity on the question. Next, और कुछ? वो तो ATC में लेंगे, कुछ तो मिसिंग लग रहा है। और फिक्स कमीशन कितना है? नेक्स्ट। और कुछ है क्वेश्चन में? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF 1,500। बस? और कुछ?
खत्म. Total will become my gross salary. Gross salary 938,690 less standard deduction कितना है बेटा? एंटरटेनमेंट अलाउंस तो नीले. प्रोफेशनल टैक्स कितना है? 2,500. The balance is called taxable salary or my gross total income, because और कुछ इनकम तो है नहीं. करेक्ट ना? कितना है? 8,86,190 less deduction under chapter 6A. बराबर ना बेटा? ADC दोस्तों कितना ADC का डिडक्शन मेरा? 67,200. पूरा मिलेगा ना जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट किया? व्हाट इज द बैलेंस टैक्सेबल सैलरी? 8,18,990. That is my total income. I'm sure we got some tremendous clarity on all the allowances, guys. And how to calculate salary. Did we get some good clarity of thought, my dear friends? Excellent. That's a question. Cheers. ये आ रहा ही नहीं, बहुत ज़्यादा है तिक्के. Online student is telling, got it correct, sir. Very good, beta. $67,200. एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट करेगा उतना मिलेगा ना. सिर्फ 1.5 लाख का लिमिट है और कुछ नहीं. अरे ग्रॉस सैलरी में एम्प्लॉय का क्यों ऐड करेंगे यार? वो जेब से जो दिया, सिर्फ एम्प्लॉयर का ऐड करेंगे ना यार. दोस्तों क्लियर है सबको? लवली क्वेश्चन मैन. आई एंजॉयड अ लॉट गिविंग दिस क्वेश्चन एंड आई एम श्योर दैट यू आल्सो एंजॉयड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. यस, मजा आ गया यार. गुड, डन. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट बैक टू आवर नेक्स्ट जॉब. दैट इज, लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू वी टैक्स gratuity, my dear friends. Gratuity, two cases. If we get gratuity during employment, during what beta? Fully taxable. Fully what, my dear friends? Taxable. And if we get gratuity at the time of retirement, I repeat again, gratuity during employment, what will happen beta? Fully taxable. At the time of what? Retirement. And generally gratuity they'll give only at the time of retirement only. Government employee, non-government employee. Now there is a problem here. Government employee, again two categories. Covered under Gratuity Act. Other side, not covered under Gratuity Act. तो समझ में आ रहा है क्या बेटा? Covered under Gratuity Act, not covered under Gratuity Act. Government employee, straight away answer is fully exempt. That is the reason why people love government jobs, because there are tremendous exemptions which they get. Non-government employee, covered under Gratuity Act, least of the following is exempt. First one, actuals. Second one, 20 lakhs.
कितने लाख बेटा? थर्ड वन 15/26 into last drawn salary into number of completed years of service. Number of what beta? Completed years of service or part exceeding 6 months. And here the core important point is that salary means basic plus entire DA. इसका मतलब क्या है? Whether it's a part of salary for retirement benefits or not. समझ में आ रहा है ना बेटा? Everybody, my dear friends, come on, covered in the gratuity act का limits क्या है बेटा? Least to the following is exempt. पहला वाला actuals per 20 lakhs, then 15/26 into last drawn salary into number of completed years of service or part exceeding 6 months. Not covered under gratuity act. पहले वाला बेटा actuals, दूसरा वाला 20 लाख. क्या समझे आप लोग? फर्स्ट दो तो सेम है. थर्ड वाला हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ completed years of service. Half into average salary into number of completed years of service. Average salary means last 10 months salary divided by 10. Last 10 months divided by 10. Salary, listen no, here, listen. I'll write the language, you correctly tell the answer. Same as HRA. Same as Provident Fund. Same as HRA. Meaning क्या है इसका? Basic plus DA part of salary for retirement benefits plus commission if given as a fixed percentage of turnover. Getting clarity everybody? That's it. But I'll give a question, I want answer. That is important. Guys, हो गया? Yes, can I proceed? Chalo, let's become perfect with this concept by discussing one question. Sir, listen now. Mr. X retired from PQR Limited on 1/1/23. 1/1/23. After rendering service of 26 years, 9 months, 12 days. He received 45 lakhs as gratuity. At the time of retirement, at the time of what beta? Retirement. His basic salary was 45,000 per month. Which was 44,000 per month up to 31st March 22. क्वेश्चन समझे क्या बेटा? नेक्स्ट, DA 10,000 per month. 40% is part of salary. Commission nil. Determine
taxable salary. Case 1, covered. Case 2, not covered. Sorry, small change in the question. Determine taxable gratuity. सैलरी हो सबकी, ग्रेजुएटी कितना टैक्स होता बोलो. कवर्ड का मतलब क्या है? कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट. Come on guys, 2 minutes, get the answer. प्रैक्टिस कराने का रीजन ही वो है ताकि आपको याद हो जाएगा. हो गया क्या? 1 minute मोर, ठीक है.
एक तो हो गया क्या एटलीस्ट? कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट क्या है बेटा आंसर? हाँ, व्हाट इज एक्चुअल रिसीव? क्या बोला शशांक भाई, समझा नहीं. फर्स्ट तो सबका सेम रहता, पता है मुझे. फर्स्ट वन एक्चुअल्स, सेकंड वन स्टैट्यूटरी लिमिट कितना है, थर्ड वन दैट्स अ होल पॉइंट. नो, 15/26 into what beta? Last drawn salary. What is the last drawn salary? Huh? Last drawn salary is 45,000 basic. DA कितना है? 10,000. That means into 55,000. पूरा DA लेंगे ना? पार्ट ऑफ सैलरी लेंगे क्या भाई दोस्तों? into what? into 27 years. Good. कितना है? 856. Exemption is 8,56,730 and the taxable is 36,43,270 is taxable. समझ में आया ना बेटा? अरे प्रैक्टिस हो रहा नहीं हो रहा यार, बोलो यार, उसके लिए तो बैठे हम लोग. प्लीज, आपको बहुत काम है लाइफ में, मुझे भी बहुत काम है लाइफ में, बट कुछ कारण से बैठे ना इधर. लेट्स फुलफिल द पर्पस. डन? नो मेक सेंस? नो? मस्त है क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेडली खतरनाक क्वेश्चंस बन रहे. नाइस. नेक्स्ट केस, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट. मिला कितना अपने को? 45 लाख. Release to the following is exempt. पहले वाला कितना है? Actuals कितना है? 45 लाख. Second one, statutory limit 20 lakhs. But the challenge is all about the third one. The third one is what beta? Half into average salary into number of completed years of service. Now what is average salary? Last 10 months salary divided by 10, which is equal to 44,000 into 1 plus 45,000 into 9 plus 6,000 into 10 divided by 10. अरे वर्किंग समझे क्या बेटा? 4,000 है क्या? 60% नहीं बोला क्या मैं? 40% बोला क्या? ठीक है, 4,000. हाँ, कुछ में क्या बोला मैंने? 40% इज अ पार्ट ऑफ सैलरी. गुड. 4,000. अरे 40% इज अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. 40% पार्ट ऑफ सैलरी मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. अरे यार सब जगह वैसे ऐसे ही कर रहे अभी तक जो करे, कुछ भी उल्टा नहीं करे. अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व करे वैसे ही सॉल्व करे. व्हेन वी से पार्ट ऑफ सैलरी दैट मींस इट इज पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स. मीनिंग इज दैट ओनली. क्वेश्चन में कभी पूरा नहीं बोलते वो लोग, मैं नहीं, क्वेश्चन में भी नहीं बोलते, आईसीआई भी नहीं बोलता है, वो सिर्फ बोलता है फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी. उसका मीनिंग वही है. सर समझ में आ रहा है क्या यार? दोस्तों बोलो ना यार, कितना एवरेज सैलरी? 48. So what is the working then? Half into 48,900 into 26. Don't tell 27. Completed years of service. क्लैरिटी आ रहा है ना बेटा? ये प्रैक्टिस का पर्पस समझ गए ना आप लोग? प्लीज गेट द क्लैरिटी व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस. कितना है वर्किंग? 630.
कितना है 635,700 बैलेंस. That's it. This figure is taxable. I think we are getting clarity. And I'm sure you enjoyed the question. Must. एकदम सही क्वेश्चन है. Enjoying salary? Difficult है. Clarity is important. Oh, thank you. Sir, clear है बेटा? Deepali ji? Sir, I hope this concept is making sense. So let's once revise gratuity beta. Which section the exemption is given? 1010. If it is government employee, what is the answer? Fully exempt. Non-government, covered under gratuity act, not covered under gratuity act. Covered under gratuity कितना है बेटा exemption? Actual 20 lakh, 15 by 26 into last on salary into number of completed years of service. Salary में क्या आएगा? Basic plus entire DA. Very good. Not covered under gratuity act. First दो तो same ही है. सिर्फ लास्ट वाला फर्क है. Half into average salary into number of completed years of service. ये क्वेश्चन में मैं इंटेंशनली एवरेज सैलरी का वर्किंग दिया, मतलब एक महीना कम बाकी महीना ज़्यादा, सो दैट मोर क्लैरिटी विल कम. अगर नहीं दिया तो क्या होगा? 45,000 इंटू 10/10, फिर 45,000 आएगा ना, मज़ा थोड़ी आता है. सर क्लियर है? डन. दैट्स अबाउट ग्रेचुइटी. लेट्स ऑल्सो कंप्लीट पेंशन टुडे. चलो पेंशन क्या हो दोस्त? पेंशन इज गिवन बाय Section 1010A. 1010A. In pension, there are two types of pension. First, normal pension, family pension. Normal pension, family pension. Normal pension will come under salaries. Family pension will come under income from, and here the deduction what you get is 50,000 or 1/3, whichever is lower, is allowed as what beta? Deduction. ये तो पता है ना बेटा दोस्तों. Now what is covered in salaries that we have to talk? Student is telling, सर हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कम्यूटेड अनकम्यूटेड बोलेंगे. हाँ वो बोलूँगा, बट पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि सैलरी में क्या जाएगा, अदर सोर्स में क्या जाएगा. सर अब भी देखते हैं सैलरी में जो पेंशन आते हैं उसको क्या करते हैं हम. दैट इज ऑफ टू टाइप्स, अनकम्यूटेड, अदर वन क्या है बेटा? व्हाट इज सेकंड वन? कम्यूटेड. अनकम्यूटेड पेंशन, commuted pension. What is uncommuted बेटा? मीनिंग क्या है? नहीं, उसको कम्यूटेड बोलते हैं. अनकम्यूटेड मतलब पीरियोडिकल पेंशन which is coming monthly, quarterly, something like that. This uncommuted pension is fully taxable. आदित्य क्या डाउट है बेटा, बोलना. कुछ गड़बड़ है क्या? अपना वर्किंग में कुछ इश्यू हुआ क्या? क्या इशू है इसमें? एम्प्लॉय का तो डायरेक्ट एटीसी में जाएगा ना. अरे यार थोड़ी करेंगे. अगर शिवा तेजा 10 लाख कमाया, उसमें से 1 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस पे किया, और 1 लाख ऐड करके फिर लेस करेंगे क्या? दैट्स अ पेमेंट बेस्ड डिडक्शन. इनकम बेस्ड डिडक्शन को ऐड करके लेस करेंगे, पेमेंट बेस्ड डिडक्शन को तो सीधा माइनस ही करेंगे ना. हर चीज ऐड थोड़ी करेंगे, बराबर है ना. अगर अपना भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है तब ऐड करेंगे. ऑब्वियसली इसका फायदा हो रहा है अपने को. इसमें फायदा क्या हो रहा है? जेब से जा रहा है ना पैसा, तो इनकम में क्यों ऐड करूं? डन. अनकम्यूटेड व्हाट इज आंसर बेटा? फुली टैक्सेबल. कम्यूटेड पेंशन अगेन टू टाइप्स. व्हाट कवर्ड क्या है? कवर्ड ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड. मतलब ऑलरेडी आप ग्रेचुइटी एंजॉय कर लिए या ग्रेचुइटी एंजॉय नहीं किए. ग्रेचुइटी एंजॉय कर लिए बॉस, देन एग्जेम्पशन इज इक्वल टू 1/3.
1/3 of total value of pension. If gratuity not received, we'll give you more exemption, which is half. Is half more, 1/3 more? Half, common sense. Half of total value of pension. 1/3 of total value of pension, half of total value of pension. Is that clear? Friends, understanding? What are the two types of pension? Commuted and uncommuted. Uncommuted, what will happen? Fully taxable. Commuted. Graduate received, kitna exemption? 1/3. Graduate not received, half. Correct? No? Write the question. अरे मैं छोड़ूंगा नहीं यार, सवाल ही नहीं है. ये सब कॉन्सेप्ट में तो प्रॉब्लम करना ही करना है. कंप्यूट taxable pension from the following details. Mr. X received 10,000 per month as pension from 1/4/22. ठीक है ना बेटा? दोस्तों, on 15th Jan 23, he commuted 60% of pension and received 3 lakhs. Sir, दोस्तों, case 1, gratuity received. Case 2, gratuity not received. समझ गए ना बेटा? Done. चलो निकालो आंसर. Come on, get me the answer. Sir, let me clarify one point in the question. I want you to calculate the taxable pension for assessment year 23-24. आधा अधूरा आंसर मत दो. मुझे वो ईयर के लिए कितना टैक्सेबल उतना बोलो आंसर. Don't tell half of answers. Tell me total answer. उमेश, पूरा आंसर बोल. आधा आधा मत बोल भाई.
क्या हो बेटा? इस दिव्या कोई कंसर्न है क्या? So let's talk about two cases, gratuity received and gratuity not received. Can we discuss the answer beta? If gratuity received, first case, what is the uncommuted pension, my dear friends? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है. ये क्वेश्चन में अनकम्यूटेड भी है, कम्यूटेड भी है. Uncommuted pension is 10,000 into 9.5 plus 4,000 into 2.5. अरे 60% कम्यूट किया मतलब 40% अभी भी अनकम्यूटेड ही है. यो मैन, ये हुई ना बात. वाओ, सरप्राइज. समझ में आ गया बेटा? कितना है? 1,05,000. सर आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी. गाइस अमेजिंग पॉइंट है ये. ऐसे क्वेश्चन करे तो परफेक्ट होते भाई. ऐसे कुछ तो क्यों करना है भाई. चलो, व्हाट इज कम्यूटेड पेंशन? कितना मिला है भाई? 3 lakhs लेस एग्जम्प्ट. कितना एग्जम्प्ट है? कितना एग्जम्प्ट है? 1/3. 1/3 into 3 lakh into 100 by 60. समझे क्या वर्किंग? By commuting 60%, we got 3 lakh. How much figure? 166, 667. The answer is 1,33,333. I hope we are clear. Gratuity not received. Uncommuted तो सेम ही रहेगा. यार बेटा बोलो. कम्यूटेड में फर्क आएगा ना बेटा? कम्यूटेड तो 3 लाख से, एग्जम्पशन में फर्क पड़ेगा. क्या फर्क पड़ेगा? हाफ इंटू 3 lakhs into 100 by 60, which comes to 2.5 lakhs. Taxable is only 50,000. Lovely question. Of course, lovely answer also. I'm sure we are fully clear with this. ये दोनों ऐड करेंगे टैक्सेबल पेंशन में, और ये दोनों ऐड करेंगे टैक्सेबल पेंशन में. I hope we are clear with this question, guys. कैसा आया दोस्त? 3 lakhs is what we got by commuting 60%. By commuting 60%, you got 3 lakhs means how much you would have got by commuting total pension? Nothing but 5 lakhs. 3 lakh into 100 by 60 is 5 lakh. 5 lakh का 1/3 कितना है? 166, 60, 67. So clear, no? Everybody? That's it. Thank you so very much. Balance will take for tomorrow. So today, guys, we got some very good knowledge with respect to allowances. We discussed a lot about deductions in salary. We discussed about gratuity. We discussed about pension. So many points we covered today. Tomorrow we'll discuss some more very interesting points in salaries. Clear, beta? Done. Thank you so much. Take care. See you all tomorrow. Bye-bye.